बैक जी। इस वीडियो में हमने परसेप्ट्रॉन के लर्निंग एल्गोरिदम को देखना है और साथ ही साथ उसकी कुछ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को भी देखना है कि उस एल्गोरिदम का असल में मतलब क्या है। ना सिर्फ कि हमें मैथमेटिकली अपने आप को कन्विंस करना है कि इट वर्क्स, बल्कि उसके साथ साथ वी आल्सो वांट टू काइंड ऑफ सी इट इन आवर हेड्स that what exactly is happening to the hyperplane as it is being rotated and positioned between the negative and the positive classes. इस एल्गोरिदम की आपको एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म मिलेगी जो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। जो फॉर्म मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसकी। लाइक इट्स द अदर फॉर्म इज़ अ लिटिल बिट लेंथियर, जिसके अंदर हम लूप के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस को डील कर रहे होते हैं और वो शायद समझने में थोड़ी सी आसान हो, लेकिन ये चीज़ जब आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो दैट वन वुड बी एब्सोल्युटली ईजी फॉर यू। तो इस वजह से आई चोज द मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म और इसी फॉर्म को मैंने यूज़ करना है आगे परसेप्ट्रॉन के कन्वर्जेंस के प्रूफ के अंदर भी। सो लेट्स बिगिन विद द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम। इस लेक्चर के लिए हमारा मेन रेफरेंस जो है वो प्रोफेसर वाइनबर्गर के लेक्चर नोट्स हैं, जो ये ऊपर सबसे पहला रेफरेंस दिया हुआ है। सो बेसिकली आई विल बी फॉलोइंग द टेक्निक दैट ही यूजेस फॉर द एल्गोरिथम, फॉर द लर्निंग एल्गोरिथम फॉर परसेप्ट्रॉन। और जो आगे मैं आपको कुछ इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दूंगा या इंट्यूशन दूंगा वो भी बेसिकली उसी एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होगी। जो दूसरा मेन रेफरेंस है जो मैं चाहूँगा कि आप अपने तौर पर अगर आपको वक्त मिले या शौक हो और आप पढ़ना चाहें तो आप वो यहाँ से फॉलो कर लीजिए। ये जो रेफरेंस है परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट वर्क्स, दिस इज आल्सो डन वेरी नाइसली। इट आल्सो गोज इनटू अ लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेल इनटू व्हाई दिस वर्क्स and how the plane rotates and so on and so forth. So if those things are not immediately obvious to you, then you should probably be looking at that very nicely written post जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। So these are my two main references जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ इन स्लाइड्स के अंदर। All right, Ji. It's as simple as this. This is the perceptron learning algorithm. So given ये यहाँ पर आपको सॉल्व हुई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है ऑन द राइट, गिवन कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, दो तरह के क्लासेस हैं। एक ही हमारे पास पॉजिटिव क्लास है जो कि प्लस से इंडिकेट हुई हुई है, एक ये नेगेटिव क्लास है जो माइनस से इंडिकेट हुई हुई है। वे रिज्यूमिंग के द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, और यहाँ मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, of the normal vector w and x, which is any point, any one of these given points. So for all of these given points the wtx is greater than 0 on this side and their labels y are +1 on this side. तो ये हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कुछ assumptions ले रहे हैं, इससे हमें यहाँ पर आसानी होगी। अगर आपको याद हो मैंने इन चीज़ों की डिस्कशन इससे पहले भी की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो if you change these assumptions, even then you can just modify the algorithm slightly and then everything still works, or you can just modify your data to fit into these assumptions. ठीक है जी। So इस साइड पे wtx is greater than 0 and your labels are +1, तो आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल हाइपरप्लेन perfectly align हुआ है और completely separate कर रहा है नेगेटिव को पॉजिटिव से। इस वजह से both of these things are met on this side of the hyperplane. On this side of the hyperplane, your wtx is less than 0 and your y's जो आपके labels हैं वो -1 है। So your labels are coming from the space of +1 and -1, right? So एंड देन बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इससे पहले देख कर आए हैं। सो इनिशियली जब हम शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये इस तरह से प्लेन पोजीशन नहीं हुआ हुआ होगा। ये प्लेन की पोजीशन, हमें एल्गोरिदम का हमारा मकसद ही यही है कि वो प्लेन को किसी ऐसी तरह से ओरिएंट कर दे कि ये लीनियरली सेपरेट करने लगे हमारी दोनों क्लासेस को, राइट? ऑल राइट जी। सो इनिशियलाइज हम कर रहे हैं ये फर्स्ट लाइन के अंदर, वी आर इनिशियलाइजिंग द वेट वेक्टर टू 0। सो वी आर नॉट मेकिंग एनी assumptions। वैसे हम इसको रैंडमली इनिशियलाइज भी कर सकते थे, हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। दैट्स वन ऑफ द वेज यू कैन इनिशियलाइज दिस, ठीक है? तो आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद यू हैव एन इन्फिनिट लूप हियर। यू कुड राइट इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। यू कैन प्रोवाइड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिस लूप वर्क्स, क्योंकि अगर ये डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो देन दिस एल्गोरिदम विल नॉट टर्मिनेट। तो इस वजह से यहाँ बेहतर ये है कि आप इसको वाइल ट्रू ना रखें। ये सिर्फ इसी सूरत में ब्रेक हो सकता है जो नीचे ब्रेक लगा हुआ है, अगर ये वहाँ पे पहुंचेगा तो एल्गोरिदम ब्रेक होगा। लेकिन वी शुड प्रॉब्ली हैव अ number account in there, but all of those are like optimizations and improvements of the algorithm when you actually implement it. The base algorithm is this. Acha janab, then we define a number m which would actually count the number of mistakes in any one iteration over the whole data set. So पूरे data set के ऊपर इसने one by one जाकर हर point को देखना है और ये देखना है कि क्या मैं उस point को सही classify कर रहा हूँ या मैं उस point को सही classify नहीं कर रहा। जब भी कहीं कोई misclassification मिलेगी मैं इस counter को increase कर दूंगा। So जब मैं सारे points को देख चुका हूँगा अगले इस for loop के अंदर, तो उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर कोई भी mistake नहीं थी तो दैट मीन्स कि इस पूरी इटरेशन के अंदर कोई भी मिसक्लासिफिकेशन नहीं पकड़ी गई, यानी मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है वो राइटली क्लासीफाई हो गया एंड सो आई कैन ब्रेक,
right? So this m is equal to 0 और ये जो if है, hopefully now this should be clear to you. Now this is the for loop where the whole fun is happening. So यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी गोइंग ओवर द होल डेटा सेट एक्स आई वाई आई बिलोंगिंग टू योर डेटा सेट. सो हर पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, और अब हर पॉइंट के ऊपर जाकर आप ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं. अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर इसकी ब्रीफली बात की थी. यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, सो इसेंशली दिस इज दिस द डॉट प्रोडक्ट और दी, बेसिकली ये इस केस में डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपली इन ये आई एम टेकिंग अ ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड देन मल्टीप्लाइंग इट विद द सेकंड वेक्टर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट? वो रिस्पॉन्स या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, और ये y है. y की वैल्यू या +1 होगी या -1 होगी. हम ये क्लेम कर रहे हैं कि गलती सिर्फ उस सूरत में होगी इफ दिस प्रोडक्ट yi इंटू डब्ल्यू टी एक्स आई, इफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0. सिर्फ उस सूरत में कोई गलती है. अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि सब कुछ सही है एंड वी कैन मूव ऑन, राइट? अब ये चीज़ आपको उस वक्त मैंने कन्विंस किया था, लेकिन हो सकता है आपने वो वीडियो ना देखी हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा पॉज करें, अपने आप को कन्विंस करें, एंड देन क्विकली आई विल शो यू कि व्हाई दिस वर्क्स. ऑलराइट, सो लेट्स कन्विंस आवरसेल्व्स. हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि वाई आई इज इक्वल टू +1 एंड दिस डब्ल्यू टी एक्स आई इज ग्रेटर देन 0. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? वाई आई is equal to -1 and this wtxi is also less than 0, right? And then इसके अलावा दो possibilities और हैं where your yi is equal to +1 but your w transpose xi is actually less than 0, and the last one is your yi is equal to -1 and your wtxi is greater than 0. Now these two are correct classifications and these two are incorrect classifications, right? अब इस फॉर्म में आप देख लें कि किस केस में आपके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे. इस केस में आपका प्रोडक्ट जो होगा, बिकॉज दिस इज +1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट? ग्रेटर देन 0. In this case, this is a negative number and this is also a negative number, so it will also be, the product would be greater than 0, right? So जो true cases हैं उसमें the product will remain greater than 0. जो केसेस सही नहीं हैं, जो मिसक्लासिफिकेशन के केसेस हैं, at that point this product would be less than 0, right? So फिर equal to 0 कब होगा? Equal to 0 का एक केस तो आप ये बिल्कुल ऊपर ही देख रहे हैं. When the weight vector is initialized to 0, when the weight vector is initialized to 0, आपने यहाँ पर less than 0 लगाया हुआ था, तो ये पहली दफा में ही कन्वर्जेंस शो कर देगा और कहेगा कि कोई गलती नहीं हुई है, right? So इस वजह से you need an equal to 0 here. I hope this line is now absolutely clear to you. If not, तो फिर इस पॉइंट पे जरा सा रुक कर अपने आप को इस पे थोड़ा सा कन्विंस कर लें. ठीक हो गया जनाब? Now let's move on. अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अच्छा गलती हुई है. अब गलती को किस तरह से ठीक करना है? या तो गलती की ये फॉर्म होगी कि ट्रू लेबल +1 था, और सॉरी ये नीचे वाली, तो या तो गलती की ये फॉर्म होगी कि ट्रू लेबल आपका +1 था और आपका WTXI जो है वो लेस देन 0 था. दैट मीन्स कि WTXI को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है. और इस केस में वेयर दिस इज -1 एंड द WTXI इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि WTXI को हमें कम करने की ज़रूरत है, W को हमें नीचे लाने की ज़रूरत है. सो व्हाट वी आर एसेंशियली डूइंग हियर इज इन दिस वन लाइन. और इस लाइन पे भी पहले थोड़ा सा खुद गौर करें, पॉज करके इस लाइन में क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर जो है हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है. ऑल राइट, सो y की दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या y +1 होगा या y -1 होगा. अगर y +1 था तो दैट मीन्स ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन सिर्फ तभी ट्रू हो सकता है अगर WTXI लेस देन 0 था, राइट? y +1 था और ये वाली एंटिटी जो है वो लेस देन 0 थी. दैट मीन्स कि इस WT को बढ़ाने की ज़रूरत है, इस W को बढ़ाने की ज़रूरत है. सो W को ये +1 है, इसकी वजह से यहाँ y प्लस ले आएगा और इसके अंदर ये x, वो डेटा पॉइंट जिसको हम कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें ऐड हो जाएगा. इस चीज़ की थोड़ी सी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि एडिशन का मतलब क्या है, वो मैं अगली स्लाइड में उसकी ब्रीफली बात करूंगा. बेसिकली एडिंग दीज टू वेक्टर्स. तो ये कह रहा है कि y तो मेरा प्लस की साइड के ऊपर था, तुम आंसर दे रहे हो जो नेगेटिव साइड के ऊपर, तो लिहाजा अपने w को, अपने नॉर्मल वेक्टर को बढ़ाओ बाय द अमाउंट ऑफ दिस वेक्टर. ये पॉइंट जो आपका xi है, इस पॉइंट से बढ़ाओ. यहाँ ये भी जहन में रखें कि मैं यहाँ खाली xi कह रहा हूँ और साथ इसको वेक्टर भी कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि माई हाइपरप्लेन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो आई कैन ऑलवेज डिफाइन दिस पॉइंट xi एज अ वेक्टर फ्रॉम 0 टू द पॉइंट xi, राइट?
और वो हाइपरप्लेन की क्या एजम्पशन है कि वो जीरो में से गुजर रहा है, ये अगर आप वो रिवीजन वाले लेक्चर के आखिर में देखें कि जिस पर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एब्जॉर्बिंग द बायस इनटू द एक्सप्रेशन, उसका क्या नतीजा निकलता है, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन ऑलवेज एज्यूम कि आवर हाइपरप्लेन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है जनाब। अच्छा, और फर्ज करें कि अगर ये y नेगेटिव वन है और ये ऊपर वाली चीज ट्रू थी, तो इसका क्या मतलब था कि y नेगेटिव वन था लेकिन ये WTXI पॉजिटिव था। दैट मीन्स कि WT को नीचे, वेक्टर को नीचे लाने की जरूरत है। दैट मीन्स कि यहाँ माइनस होना चाहिए, तो ये y की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा एंड दिस एक्सप्रेशन विल बिकम W माइनस XI। राइट, ठीक हो गया। इस चीज पे रोक के अपने आप को कन्विंस कर लें, दो ही बातें थी और इस एल्गोरिदम में कुछ नहीं है। एंड देन m इज इक्वल टू m+1, मीनिंग के मिस्टेक हो गई, मिस्टेक पकड़ी गई है, मिस्टेक हुई है, मीनिंग के इस पूरी की पूरी इटरेशन के अंदर एक पॉइंट तो मिसक्लासिफाई हुआ हुआ था। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ ठीक मिला। एंड देन यू एंड दिस इफ एंड देन यू गो ओवर द होल डेटा सेट इन दिस फॉर लूप एंड देन यू चेक कि कोई गलती हुई थी या नहीं। अगर एक भी गलती हुई थी तो फिर हम यहाँ से दोबारा वाइल की अगली इटरेशन में आ जाएंगे। अगर एक भी गलती नहीं हुई तो हम ये कहेंगे कि हमारा सारा डेटा सही से क्लासीफाई हो गया है एंड वी आर ऑल सेट। राइट, सो दिस एल्गोरिथम इज नाउ डन। ये आपका, दिस इज द perceptron learning algorithm. And the claim here is that this algorithm will find a hyperplane separating the negative class from the positive class, provided that your data was linearly separable. अगर data ही linearly separable नहीं है तो then it will not be able to find such a hyperplane and it will continue running. तो फिर ये एक infinite loop बन जाएगा, right? जिसको रोकने का हमने पहले बात की थी कि आपको कोई ना कोई checks बीच में रखने पड़ते हैं. Now let's very quickly look at some geometric
interpretation. ये वाली slide, by the way, I'm just directly I'm taking the diagram from Weinberger's lectures. I have a few other nice diagrams, लेकिन again सबकी ज़रूरत नहीं है. इसकी अगर कोई further आपको interpretation में help चाहिए, यहाँ से बात अगर ना समझ में आई, तो मैं recommend करूँगा कि जो मैंने आपको reference number 2 शुरू में दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने graphical representation की बात की है, graphical intuition की बात की हुई है. So वो जो post है उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए. वहाँ पर उसने बहुत अच्छी तरह से आपके cos alpha या cos theta के साथ इसको link करके explain किया हुआ है कि किस तरह this is true and किस तरह the addition of vectors here is essentially resulting in the rotation of your hyperplane. So इतनी सी बात है सिर्फ. So ये जो पहली leftmost आपके पास स्लाइड है, लेफ्ट मोस्ट जो आपका फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा हाइपरप्लेन, ये ऑरेंज लाइन ये पोजीशन हुई हुई है, इसका नॉर्मल वेक्टर डब्ल्यू टी है, मीनिंग टीएथ इटरेशन का डब्ल्यू. और ये हाइपरप्लेन एक एक गलती कर रहा है. एक पॉजिटिव वन को ये गलत मिसक्लासीफाई करके बैठा हुआ है, और एक ये नेगेटिव को मिसक्लासीफाई करके बैठा हुआ है. इसने एक एक गलती की, एक गलती इधर की, एक गलती इधर की है. इसने टोटल 2 गलतियों के ऊपर बैठा हुआ है. नाउ लेट्स एज्यूम कि ये इसको, इस वाले पॉइंट को पहले एडजस्ट करने की कोशिश करता है, नेगेटिव को करता है. दोनों में से किसी को भी कर सकता है ना. फर्ज करें आपका लूप यहाँ से शुरू हुआ है, सो इसने यहाँ पर इस पहले नेगेटिव पॉइंट को उठाया. नेगेटिव पॉइंट को उठाकर फिर ये क्या करेगा, ये इसको माइनस करेगा डब्ल्यू के अंदर से. तो ये डब्ल्यू में से एक्स को, डब्ल्यू टी में से एक्स ये माइनस होता हुआ आपको नजर आ रहा है, राइट. सो डब्ल्यू टी में से एक्स कैसे माइनस होगा, यू रिमेंबर कि वेक्टर्स के अंदर जो है वो सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है. आपने बेसिकली इसके हेड के ऊपर इसकी टेल यहाँ अलाइन कर दी है, ये इस तरफ जा रहा था, तो इसकी ओरिएंटेशन, इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल उलट के इसको यहाँ पर रख दिया हमने. एंड देन दिस इज द डॉटेड लाइन इज द रिजल्टेंट वेक्टर डब्ल्यू टी माइनस एक्स. ठीक है. तो जब डब्ल्यू टी माइनस एक्स यहाँ आ गया, ये चीज आपका नया नॉर्मल बन गया. तो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होता है आपका प्लेन. सो एसेंशियली योर प्लेन रोटेटेड विद इट, एसेंशियली योर प्लेन रोटेटेड विद इट. जब आपका प्लेन रोटेट हुआ, ये इत्तेफाक से एक ही रोटेशन के अंदर आपके सारे के सारे पॉइंट्स सही क्लासीफाई हो गए, और अगली दफा आपका परसेप्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा. अगले उसमें जब इटरेशन में आएगा, वो देखेगा एक भी गलती नहीं हुई और वो ब्रेक कर जाएगा बेसिकली. बट इसकी ये इंटरप्रिटेशन होपफुली अब आपको क्लियर हो गई. अगर मैं ये पहले प्लस वाले पॉइंट को करता, वो भी अपने तौर पे अपने आप को कन्विंस करके देख लीजिएगा कि फिर मैं, इसका मतलब है वहां पर वेक्टर प्लस की तरफ जा रहा होता, और प्लस की तरफ जाने वाला वेक्टर, सो अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ, सो यहाँ पर दिस वुड हैव बीन the vector and this vector would have added here to this point. और अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वैसा ही ऐड हो रहा है जैसे वो नेगेटिव एक्स ऐड हो रहा था. सो ये वेक्टर यहाँ पर ऐड होगा, और एसेंशली आपका फिर भी जो आपका रिजल्टेंट है वो इसी पॉइंट पर आएगा जहाँ इससे आया. तो दोनों में से किसी से भी इत्तेफाक से इस पॉइंट पे कर लेता, तो इसने इसी तरह से ओरिएंट होना था. और यू कैन बेसिकली सी द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ब्लू एंड रेड पॉइंट एंड यू कैन कन्विंस योर सेल्फ के वाई दिस इज ट्रू, राइट. इन दिस पर्टिकुलर केस ये ऐसे ही होना था. एक और चीज़, अगर आप के पास टाइम हुआ और आप जाकर उस पोस्ट को भी पढ़ रहे हुए, तो मैं एक चीज़ पे आपको क्विकली कन्विंस कर देता हूँ, जो आपको वहाँ पे वक्त नहीं लगाना पड़ेगा. बाय द वे दिस द लेक्चर इज नाउ ओवर, सो द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इज ओवर. सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ से जाकर मजीद अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, वो ये चीज़ नोट कर लें कि अगर हम ये देखें कि जब सही क्लासिफिकेशन हुई हुई होगी, तो अगर हम खाली आपके नॉर्मल वेक्टर W को देखें, खाली नॉर्मल वेक्टर W को देखें, और इसका एंगल कैलकुलेट करें उन सारे वेक्टर्स के साथ जो हमारे पास पड़े हुए हैं. सो दीज आर ऑल ऑफ योर वेक्टर्स, राइट. मैं इनकी डायरेक्शंस अभी बनाता हूँ. लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द लाइंस, व्हिच इज still a big challenge for me to draw straight lines on this digital tab. But ये आपके सारे के सारे वेक्टर्स हैं. हम यहाँ पर ये शो कर सकते हैं, we can actually mathematically prove it, however just graphically अपने आप को ज़रूर easily convince कर सकते हैं कि all of the points which should be given a positive, so all of the positive points are at no more than an angle of 90 degree. So at 90 degree or less के एंगल पर होंगे, ये आपके नॉर्मल से, ये आपके नॉर्मल से 90 डिग्री या लेस के एंगल, यानी देखिए ना, ये हाइपरप्लेन से ऊपर ऊपर ही होंगे ना, हाइपरप्लेन खुद 90 डिग्री के एंगल पर है. तो ये सब के सब पॉजिटिव पॉइंट आपके इसी जोन के अंदर होंगे, राइट. और नेगेटिव पॉइंट सारे के सारे आपके 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल में होंगे. तो हमारा जो परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम है, एसेंशली वो कोशिश ये कर रहा है कि हर पॉजिटिव पॉइंट को देखकर उससे एंगल को 90 डिग्री से कम करने की कोशिश कर रहा है, यानी ओवरऑल उससे अपने एंगल को कम करने की कोशिश कर रहा है. और हर नेगेटिव पॉइंट को जो मिसक्लासीफाई हुआ है उसको देखकर उससे अपने एंगल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. ये एसेंशली 2 काम सिर्फ हो रहे हैं जो एक लाइन के अंदर कंप्रेस हुए हुए हैं पिछली स्लाइड के अंदर, जहाँ पे आप जो है वो ऐड कर रहे हैं, you're basically adding y xi
उसको आप ऐड कर रहे हैं अपने W के अंदर, उस लाइन में ये दो काम बेसिकली हो रहे हैं। और वो जो मैंने कहा था ना, दो तरह से एल्गो को लिखा जा सकता है, वो एसेंशली सिर्फ ये है कि आप इसकी एक की जगह दो कंडीशंस लिख दें। आप ये कहें कि अगर वो लेस है तो इसको ये करो और मोर है तो ये करो, दैट्स दी ओनली डिफरेंस। तो आई नो कि मेरी क्लास में नॉन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो इस वजह से कंप्यूटर साइंस वालों से माजरत कि मुझे बाज़ दफ़ा ज़्यादा डिटेल्स में जाना पड़ता है, बट आई हैव अ फेयर बिट ऑफ स्टूडेंट्स, अ फेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास who are not CS backgrounds, who are not CS majors. So this was for you guys. तो बाकियों को मैंने बता दिया था कि मेरा लेक्चर कहाँ ख़त्म हुआ है, and now we can actually stop. तो अगले लेक्चर के अंदर which will be the last lecture on perceptron, we'll be looking at a proof of the convergence, कि क्या हमारे पास कोई गारंटी है कि ये एल्गोरिथम कन्वर्ज करेगा गिवन कि डेटा लीनियरली सेपरेबल है। अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल है तो क्या ये गारंटी करता है कि कन्वर्ज करेगा। एक सवाल मैं आपसे थोड़ा सा आपके जहनों को इस सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा। मैं आपके सामने दो डेटा सेट ड्रॉ करता हूँ। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ टू डेटा सेट्स, ताकि अगली वीडियो से पहले पहले आप थोड़ा सा तो सोच कर आए ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे, मैं यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स बना देता हूँ और मैं यहाँ पर भी कुछ डेटा पॉइंट्स बना देता हूँ, एंड देन लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, और मैं यहाँ पर भी कुछ डेटा पॉइंट्स बना देता हूँ, और मैं यहाँ पर भी कुछ डेटा पॉइंट्स बना देता हूँ। अब आप इन दोनों साइडों को देखें, इस साइड को भी देखें और इस साइड को भी देखें, और इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचना शुरू करें कि अगर मैं ये डेटा अपने परसेप्ट्रॉन के लर्निंग एल्गोरिदम को दूं वर्सेस कि मैं ये डेटा अपने परसेप्ट्रॉन के लर्निंग एल्गोरिदम को दूं, दोनों जो डेटा सेट्स हैं ये दोनों के दोनों लीनियरली सेपरेबल हैं अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव क्लासेस में। दोनों के बीच में लाइन लग सकती है, लेकिन इन दोनों में कोई फ़र्क है। आपने अपने आप से सिर्फ सवाल ये करना है कि लेफ्ट वाला जल्दी कन्वर्ज होगा या राइट वाला जल्दी कन्वर्ज होगा। अगर हम एज्यूम कर लें कि कन्वर्ज हो जाएगा, तो फिर दोनों में से जल्दी कौन सा कन्वर्ज होगा। और ये सवाल आप बिल्कुल अपने इंट्यूशन से ये सवाल कर सकते हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे रहा, आई विल बेसिकली जस्ट स्टॉप हियर एंड आई विल टॉक अबाउट दिस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू जी।